Today we have to continue our paper molecular biology and this is your lecture number 4 and आज हम डिस्कशन करमा that is about the DNA structure बाबद रे डिस्कशन करमा लास्ट क्लास रे how the nucleotides are joined तार बाबद रे डिस्कशन करितला देखुतला the nucleotides are joined by a specific bond ताके कहूतला मैं कैम बॉन्ड बोली करी कहूतला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोली करी कहूतला okay when one nucleotide that is joined with another nucleotide semanकर भितरे कैम बॉन्ड फॉर्मेशन होतला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होतला तार बाबद रे हमें डिस्कशन करितला लास्ट क्लास रे अगेन आउ थरे में रिमाइंड कर दउछ देखो जे हमर जतबेले दुईटा न्यूक्लियोटाइड्स भितरे बॉन्ड फॉर्मेशन होचे जतबेले गोटे चेन फॉर्मेशन होचे बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स सेनो हमर डीएनए तयारी होचे ना तो सपोज दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड हला okay this is one nucleotide this is having the nitrogenous base suppose this is your adenine and here there will be your phosphate group then another nucleotide asikri keno join haba 1 2 3 4 number this one 5 number ta ache to amar 3 number re asikri join esi another nucleotide to eta asala another nucleotide okay and here suppose guanine ache then here there will be your phosphate group and this phosphate yadu phosphate connect hela if phosphate ta yade connect hitila already okay तो दुईटा न्यूक्लियोटाइड्स असला इ जगह रे हमर कैम बॉन्ड फॉर्मेशन होचे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होचे okay another nucleotide asुचे and again it will make another chain okay another nucleotide add कला तो चेन के elongate करौचे सपोज इ जगह रे सपोज धरनियो साइटोसिन लागि छे and here this is your phosphate group is connected with the both the nucleotide okay आ गुटे nucleotide असला this is suppose added here and suppose इ जगह रे thymine अछि and here this one that is your phosphate group is connected here right तो इटा हमर काना मिलला हमको चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलला बट डीएनए हमें जतले देखुचो डीएनए रे हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड रो चेन थिसे दुईटा न्यूक्लियोटाइड रो चेन थिसे इडा गुटे चेन हला बट आरो न्यूक्लियोटाइड रो चेन हमें जतले देखुचो आरो न्यूक्लियोटाइड रो चेन टा उल्टा डायरेक्शन रे थिसे ओके आरो न्यूक्लियोटाइड रो चेन टा उल्टा डायरेक्शन रे प्रेजेंट थिसे ओके उल्टी करी अछि ओके and here this one that is your phosphate group eta 1 number eta 2 number eta 3 number eta 4 number ई जगह रे 5 number कार्बन थिला okay and here हमर जदी जगह रे एडेनाइन अच्छे तार फ्रंट रे सब बेले काना थिसी that is your thymine you have to remember this and इमनकर भितरे कैम बॉन्ड फॉर्मेशन एसी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन एसी केतेटा हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनाइन और थाइमिन भितरे दुईटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन एसी तारपर देखो नेक्स्ट हमर अनदर न्यूक्लियोटाइड विल जॉइन हियर तो हमर अनदर न्यूक्लियोटाइड जतले जॉइन होउचे ओके हियर दिस वन विल कनेक्ट हियर एंड इनो जदी गुआनाइन अछि तो हमर इनो कणा रहबा गुआनाइन रो फ्रंट रे सब बले रहबा साइटोसिन रहबा एंड इमनकर भितरे तीनटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होउचे okay then here this is your phosphate group then another nucleotide will join here okay and here जदी साइटोसिन अच्छे तो साइटोसिन रो फ्रंट रे सब बेले रहबा गुआनाइन रहबा एटा के पेयरिंग रूल बेस पेयरिंग रूल बोली करी कहै जैसे गुटे नाइट्रोजनस बेस आ गुटे नाइट्रोजनस बेस संगे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करी बेस पेयर फॉर्मेशन करूचे देन दैट हम डिस्कशन करमा टिके परे दैट वाज गिवन बाय चार्गोव्स ओके तबरे असला अनदर न्यूक्लियोटाइड विल कनेक्ट हियर दिस वन दैट इज योर फॉस्फेट ग्रुप एंड हियर दिस विल इना जदी थाइमिन अछि तो थाइमिन रो फ्रंट रे सब बेले काना रहबा एडेनाइन रहबा एन एडेनाइन और थाइमिन भितरे केतेटा बॉन्ड दुईटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होचे तो हमर इनो जते बेले ई चेन जते बेले तयारी हबा ओके सब बेले इटा पहला आसला तारपरे इटा ओके इना जंता दिस वन इज फास्ट तारपरे इटा जॉइन होइचे just like that eta pehla join haba tarpor eta join haba because always nucleotides can direction re join esi 5 prime to 3 prime direction re okay because you know हमर एटा phosphate group ते रहला ना phosphate group जदी इ जगह रे रहला बेले इ जगह रे काना थबा एटा 5 नंबर कार्बन okay and एटा 3 नंबर कार्बन एटा केते नंबर है इनो रहला हमर 5 नंबर कार्बन इ जगह रे 5 नंबर एटा 3 नंबर तो इधर 5 नंबर का इधर 3 नंबर संगे आसे कनेक्ट है सी डायरेक्शन रे सब बेले जॉइन है
ओके देन इतार इनो 5 नंबर अछि 5 नंबर टा इतार 3 नंबर संगे कनेक्ट हेबा तो सब बोले 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन रे जॉइनिंग हेसी ओके तो ऑलवेज न्यूक्लियोटाइड जॉइन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन रे तार बाबद रे हम डिस्कशन करथिला लास्ट क्लास रे तो इटा मोर डीएनए रो 2D स्ट्रक्चर डीएनए रो 2D स्ट्रक्चर जे मोर डीएनए रो इटा गुटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड रो चेन हला एंड इटा गुटे न्यूक्लियोटाइड रो चेन हला दुईटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्मेशन हला ओके तो डीएनए रे दुईटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्मेशन हला एंड बोथ आर जॉइंड विथ ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड इमनकर भीतर एटा कैम बॉन्ड फॉर्मेशन होइचे हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मेशन होइचे हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हिसाब दे कंसीडर करम बहुत वीक फोर्स है जदि हम बहुत टेंपरेचर भी दे दमा बेले हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हे जिबा दुई डीएनए रो स्ट्रैंड ता सेपरेट हे जि पारबा राइट सो एनीवे देखो अभी हमें जन दुईटा चेन पाइला हमें ई दुही चेन रो जदि हमें पोल बाहर करमा दुईटा एंड बाहर करमा ई एंड रे की होचे खाली देखो इटा 1 2 3 4 5 राइट तो इनो हमर के खाली होचे 3 नंबर ओएच ग्रुप खाली होचे तो ई जन एंड रहला इटा के गुटे चेन धरला ओके इटा के गुटे जदी चेन नलना ई एंड के कहमा 3 प्राइम एंड बलिकरी कहमा बिकॉज़ ई 3 प्राइम एंड इथिर लागी कहूचू जे इनो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप टा खाली होचे बट इतर 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप टा खाली होचे के नहीं इधर 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप काना फॉर्मेशन करबा लगी यूज हे जैछे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करबा लगी यूज हे जैछे राइट सेंता इनो जे देखमा इधर 5 नंबर कार्बन रे जन फॉस्फेट लागि छे से खाली होछे आ कार संगे लागि छे के नहीं लागि तो ई एंड के कहमा 5 प्राइम एंड बलिकरी कहमा ओके इटा जन चेन हला ओके ई चेन के मुई सपोज एंता हिसाब रिप्रेजेंट करली दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड्स माने जदी जॉइन हेछ ओके तो हमें गुटे एंड के कहूचू क्या एंड कहूचू 5 प्राइम एंड तो आरो एंड के कहला क्या एंड बोली करी कहला 3 प्राइम एंड ओके एंड सपोज दिस वन इटा जदी लखमा इटा के खाली रहला 3 प्राइम ओएस टा इनो खाली रहला तो ई एंड के कहमा क्या एंड बोली करी कहमा 3 प्राइम एंड बोली करी कहमा इनो के खाली रहला 5 नंबर कार्बन टा खाली रहला सो दैट ई एंड के काना कहमा 5 प्राइम एंड बोली करी कहमा तो इनो जन चेन देखुचू इटा 3 प्राइम 5 प्राइम चेन है एंड ई चेन के हमें काना कहमा 5 प्राइम 3 प्राइम चेन बलिकरी कहमा दुही चेन उल्टा डायरेक्शन रे अछन आरो चेन के हमें जतेले डिनोट करूछु आरो चेन टा जतेले डिनोट करूछु 3 3 6 ओके इटा हला 5 प्राइम तो ई साइड टा काना रहउचे 3 प्राइम देखो इटा 5 प्राइम 5 नंबर कार्बन रे जन फॉस्फेट ग्रुप लागि छे खाली अछि इनो 3 नंबर कार्बन रे जन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लागि से खाली अछि राइट सेते लगी एंड के कहला 3 प्राइम एंड जेतु 3 नंबर कार्बन टा खाली होचे सेते लगी 3 प्राइम एंड इनो 5 नंबर कार्बन टा जेतु खाली होचे सेते लगी 5 प्राइम एंड जनरली 3 प्राइम एंड टा खाली नाही रहे 3 प्राइम एंड टा काना हेसी जनरली 3 प्राइम एंड टा हमर जनरली काना हेसी फॉस्फेट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करबा लगी यूज हेसी बट इनो 3 नंबर कार्बन टा इ जगह रे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करबा लगी यूज हिचे के नाही है सो दैट 3 प्राइम कार्बन टा खाली अछि सेते लगी तके 3 प्राइम एंड बोली करी कहला 3 नंबर कार्बन लगी 3 प्राइम वर्ड यूज करछु इजेन 3 प्राइम माने कणा इजेन गुटे जन डैश मारली तके कहछु 3 प्राइम बोली करी रीड करछु 3 डैश कहि परमा 5 डैश कहि परमा राइट इ जगह रे 5 नंबर कार्बन देखो इतर 5 नंबर कार्बन टा फ्री अछि के इ न्यूक्लियोटाइड ड्रॉप 5 नंबर कार्बन रे काना लागि छे फॉस्फेट ग्रुप लागि छे एंड से जाई करी काना फॉर्मेशन करी छे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करी छे सो द इतर 5 नंबर कार्बन रे जन फॉस्फेट ग्रुप अछि से फ्री नाही नो बट इतर 5 नंबर कार्बन रे जन फॉस्फेट ग्रुप लागि छे से फ्री अछि सेति लागि इते के कहला कैंड बोली करी कहला 5 प्राइम एनी एंड के कैंड कहला 3 प्राइम एंड बोली करी कहला सेंदा इते के कहला 5 प्राइम एंड बोली करी कहला एंड इते के 3 प्राइम एंड बोली करी कहला राइट सो इटा जदी 3 प्राइम हला तो इटा केने एंड हला 5 प्राइम एंड हला ओके ए दुई जनकर भितरे काना फॉर्मेशन होइचे हाइड्रोजन बॉन्ड किछि जगह रे 3टा हाइड्रोजन बॉन्ड किछि जगह रे 2टा हाइड्रोजन बॉन्ड ओके किछि जगह रे 2टा हाइड्रोजन बॉन्ड तो किछि जगह रे 3टा हाइड्रोजन बॉन्ड कार भितरे 3टा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होइचे गुआनिन एंड साइटोसिन भितरे एंड कार भितरे 2टा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होइचे एडेनाइन और थाइमिन भितरे 2टा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होइचे ओके तो इटा हला 2D स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए बट इता के जदी हमें कॉइल कर देला डीएनए जनरली केन फॉर्म रे एग्जिस्ट करसी हेलिकली कॉइल्ड और स्पाइरली कॉइल्ड फॉर्म रे एग्जिस्ट करसी
ओके जहा के हमें 3D स्ट्रक्चर जदी देखमा तापरे जानि परमा जे हाउ इट इज एक्चुअली लुक ओके टिके गले मी देखामी तार 3D स्ट्रक्चर एनिमेशन करी कर देखामी तो एनीवे जदी हमें देखु चोन डीएनए रो 2D स्ट्रक्चर मोर डिटेल्स देखो एबे जदी हमें 2D स्ट्रक्चर मोर डिटेल्स स्टडी करमा हाउ इट इज एक्चुअली लुकिंग देखो डीएनए रो इटा के हमें कहला केन एंड बोली करी कहला लेट मी टेक ओके देखो इटा गुटे न्यूक्लियोटाइड रो इटा गुटे चेन हला दिस इज वन चेन हला ओके दिस इज क्लियर समस्तन को ओके व्हाइट कलर टिके लाइट लगी प्रॉब्लम होतई पारे एनीवे दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड रो चेन हला दुईटा न्यूक्लियोटाइड रो चेन अछि ओके एंड इस जगह रे के खाली अछि 5 नंबर फॉस्फेट ग्रुप खाली अछि जगे 5 प्राइम एंड कहला याडे क्या कहला तके 3 प्राइम एंड इते के 3 प्राइम एंड कहला इते के 5 प्राइम एंड बोली करी कहला ओके एंड इट हसला सपोज धरनो एडेनाइन इट हला एडेनाइन एंड इट हला थाइमिन एडेनाइन और थाइमिन भीतर कैम बॉन्ड फॉर्मेशन है हाइड्रोजन बॉन्ड इटा होचे देखो हमर इटा देखाला ग्वानाइन एंड इटा हला साइटोसिन ग्वानाइन और साइटोसिन भीतर केतरा हाइड्रोजन बॉन्ड 1 2 3 ओके इटा हला हमर एडेनाइन एंड इटा हला थाइमिन इमानकर भीतर केतेटा हाइड्रोजन बॉन्ड दुईटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है ओके एंड इटा हला सपोज योर ग्वानाइन and this is your cytosine इमानकर भीतर केतेटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होइछे तीनटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होइछे दिस इज द 2D स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए बट डीएनए टा 2D स्ट्रक्चर रे एग्जिस्ट नाही करे डीएनए एग्जिस्ट करसे 3D स्ट्रक्चर जे देखमा तार जदी स्पाइरली कॉइल फॉर्म रे देखमा हाउ इट इज लुक तार बाबद रे डिस्कशन करबार आगरु मय तार बाबद रे डिस्कशन करमी तार आगरु गोटे कथा कहि रखमी जे हमें डीएनए रो 3D स्ट्रक्चर जतेले रीड करू okay next studying the 3D structure of the DNA the long question is 3D structure of the DNA 3D structure of DNA 3 dimensional structure of DNA DNA रो 3D structure जते बेले हमें देखु छु 3D structure that was given by two biologists one is your Watson and another one is your Crick Watson और Crick बोली करी दुईटा biologist जेन माने कि DNA रो 3D structure और डीएनए रो एक्चुअल जहा के हमें रीड करू छु दैट इज द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए केन माना प्रोवाइड करथिले दैट इज योर वाटसन एंड क्रिक प्रोवाइड करथिले जिमा आउट के भीतर के देखो 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक Watson and Crick Watson और Crick 3D स्ट्रक्चर देथिले डीएनए रो बट Watson and Crick 3D स्ट्रक्चर देथिले सिना बट इफ यू सी the Watson and Crick they have got some data from other biologists Watson और Crick समाने अलगा किछि बायोलॉजिस्ट रो काम जहा करितिले समाने एक्सपेरिमेंट करितिले समानकर एक्सपेरिमेंट रो डाटा एक्चुअली कलेक्ट करितिले एंड से डाटा के कलेक्ट करि करि दे गिव द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए Watson and Crick they actually not gave this structure by their own way ताकर निजर हिसाबे समाने नाही देथि एक्चुअली Watson और Crick they study the other findings ओके जेंदा कि चार्कोव्स बोली गोटे बायोलॉजिस्ट थिले ताकर डाटा के समाने कलेक्ट कले another two biologists Rosalind Franklin and another one that is your Wilkin saman ko data ke samane analysis kole and after getting the knowledge they gave the 3D structure of the DNA takar nijar hisabe samane 3D structure of the DNA nai dethi they gave the 3D structure of the DNA based on two findings duita experiment ke base kari kari they gave this concept tar babad re first discussion karu tapare samane kana kahitile discussion karma okay but this structure of the DNA this structure of DNA was based on two findings दुईटा findings के बेस करी two findings और experiments कोई परमा दुईटा फाइंडिंग्स और दुईटा एक्सपेरिमेंट के बेस करी दे गेव दिस 3D स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए ओके इमन कर एक्सपेरिमेंट के समाने स्टडी करले एंड दे गेव द
3D structure of the DNA काना काना से दुईटा फाइंडिंग्स थिला one of the findings that was by your Chargaff's गोटे फाइंडिंग हला one of that experiment that is Chargaff's experiment the biologist ताकर ना हला Chargaff's experiment okay and another experiment that is Wilkin and Franklin's experiment Wilkins and Franklin experiment Franklin's experiment दुईटा experiment के बेस करके they gave this concept what is Wilkin and Franklin and another one that is your Chargaff's experiment okay Chargaff experiment पहला देखूं तापरे Wilkin and Franklin बाबत रे डिस्कशन करमा Chargaff एक्चुअली काना कहले Chargaff एक्चुअली डीएनए ऊपर बहुत दिनों से स्टडी करूथिले ओके Chargaff काना कहले he analyzed the structure of the DNA रा स्ट्रक्चर के स्टडी करथिले एंड देखले जे द डीएनए रे जतकी एडेनाइन प्रेजेंट अछि सतकी काना प्रेजेंट अछि थाइमिन प्रेजेंट अछि डीएनए रे जतकी एडेनाइन प्रेजेंट अछि सतकी काना प्रेजेंट अछि थाइमिन प्रेजेंट अछि एंड डीएनए रे जतकी गुआनाइन प्रेजेंट अछि सतकी काना प्रेजेंट अछि साइटोसिन प्रेजेंट अछि तो Chargaff कंक्लूजन रे पहुंचले जे इन डीएनए the amount of adenine is equivalent to amount of thymine and the amount of guanine is equivalent to amount of cytosine right Chargaff experiment kale he performed the chemical analysis of DNA okay and he found that in DNA रे the amount of adenine or the concentration of the adenine concentration of adenine is equivalent to concentration of thymine देखो एते के शॉर्ट रे फेर लिखमा एक्चुअली से काना कहले जे ओरिट ना हो okay concentration of adenine is equivalent to concentration of thymine as well as कहले जे concentration of and concentration of guanine is equivalent to concentration of guanine is equivalent to concentration of cytosine okay that means काना कहले जेतेले केमिकल एनालिसिस कले डीएनए रो देखले जे डीएनए रे इन डीएनए amount of adenine के लखला शॉर्ट रे ए is equivalent to amount of thymine adenine रे ए डीएनए रे जतकी एडेनाइन प्रेजेंट अछि सतकी काना प्रेजेंट अछि थाइमिन प्रेजेंट अछि राइट सेमता देखले जे डीएनए रे जतकी गुआनाइन प्रेजेंट अछि सतकी काना प्रेजेंट अछि साइटोसिन concentration of adenine is equivalent to concentration of thymine concentration of guanine is equivalent to concentration of cytosine जतकी गुआनाइन सतकी साइटोसिन जतकी एडेनाइन सतकी थाइमिन एटा के कहले that was given by Chargaff's experiment okay ये डाटा के एक्चुअली कलेक्ट कले कियो वाटसन एंड क्रिक एंड तकर 3D स्ट्रक्चर जतेले डिस्कशन करमा से जगह रे समाने कहले वाटसन एंड क्रिक जे Chargaff तो कहितिले जे एडेनाइन जतकी थिबा सतकी थाइमिन थिबा गुआनाइन जतकी थिबा साइटोसिन सतकी थिबा बोले एटा केते बेला पॉसिबल हवा
only when adenine will pair with the thymine जते बोले adenine सब बोले हाइड्रोजन बॉन्ड कार संगे फॉर्मेशन करथबा thymine संगे सेंता guanine जते बोले साइटोसिन संगे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करथबा सेते बोले खाली ई कांसेप्ट पॉसिबल हे पारबा डीएनए रे एडेनाइन जतकी थाइमिन सतकी गुआनिन जतकी साइटोसिन सतकी पहले एटा केते बेले पॉसिबल हबा सपोज इटा हमर डीएनए अछि ओके डीएनए रे ओके इटा हला एडेनाइन इटा हला गुआनिन इटा हला साइटोसिन इटा माने कर थाइमिन हला ओके डीएनए दुटा स्ट्रैंड अछि इनो थाइमिन अछि इनो साइटोसिन अछि इनो गुआनिन अछि इनो एडेनाइन अछि ओके इमान कर भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन अछि राइट एबे देखो टोटल डीएनए रे जतकी एडेनाइन अछि सतकी थाइमिन अछि कि नानो एडेनाइन केतरा अछि 1 2 थाइमिन केतरा अछि 1 2 राइट गुआनिन केतरा अछि 1 2 साइटोसिन केतरा अछि 1 2 ओके जतकी एडेनाइन सतकी थाइमिन जतकी गुआनिन सतकी साइटोसिन एटा केते बेले पॉसिबल हबा जते बेले एडेनाइन ऑलवेज कहार संगे पेयरिंग करथबा हाइड्रोजन बॉन्ड कहार संगे फॉर्मेशन करथबा थाइमिन संगे जतेले साइटोसिन गुआनिन संगे सब बेले हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करूथबा देन ओनली इटा पॉसिबल है जदि एडेनाइन अलगा कहार संगे जदि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करूथुता बेले इटा पॉसिबल है तिता के ओके तब सटा पॉसिबल नहीं है परथिता सतिर लगी ई कांसेप्ट के दे गेट दिस कांसेप्ट फ्रॉम द चार्गॉफ्स एक्सपेरिमेंट चार्गॉफ रो एक्सपेरिमेंट रो कांसेप्ट के नेले एंड वाटसन एंड की ताकर मॉडल रे डिस्कशन करमा ताकर मॉडल पे ताकर मॉडल रे इटा के पुट कर देले जे इन द डीएनए एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन गुआनिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन ई कांसेप्ट ता चार्गॉफ नाही देथि दिस कांसेप्ट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक बट चार्गॉफ काना करिथिले जे चार्गॉफ देखले जे डीएनए रे जतकी एडेनाइन अछि सतकी थाइमिन अछि डीएनए रे जतकी गुआनिन अछि सतकी साइटोसिन अछि ई कांसेप्ट के बेस करी करी वाटसन एंड क्रिक ताकर मॉडल रे कहले जे ए विल पेयर विथ टी एंड जी विल पेयर विथ सी ओके एनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आउट के जुमा देखो आउ काना कहले चार्गॉफ ओके चार्गॉफ तापरे कहले देखो एडेनाइन आउ गुआनिन इटा एडेनाइन जतकी थिबा थाइमिन सतकी थिबा गुआनिन जतकी थिबा साइटोसिन सतकी थिबा एटा कहले एबे दुईटा के मिसै दो टिके गणित टिके पढी दमा ओके एबे एडेनाइन और गुआनिन के मिसै देला बेले इज इक्वल टू केते हबा थाइमिन प्लस साइटोसिन हबा कि नहीं याडे इस साइड के मिसै देला इटा दुईटा के मिसै देला ओके ए इज इक्वल टू टी जी इज इक्वल टू सी देन ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी हबा कि नहीं हबा राइट तो इंप्लाइज दैट एबे हमें काना करि परमा a प्लस g डिवाइडेड बाय t प्लस c के आनी आसना तल के इज इक्वल टू काना हबा 1 इटा के आनी आसना बेले इटा बाहरला केते 1 दैट इज योर कांस्टेंट ओके काना कहले देखो जे a प्लस g डिवाइडेड बाय t प्लस c दैट इज कांस्टेंट फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द डीएनए रे a plus g divided by t plus c माने डीएनए रो एडेनाइन ने गुआनिन के जदी मिसै देला डिवाइडेड बाय थाइमिन और साइटोसिन के जदी मिसै देला बोले तकर वैल्यू केते आसबा तार जदी रेशियो बाहर करला तार वैल्यू केते आसबा 1 आसबा दैट इज कांस्टेंट है दैट इज कांस्टेंट फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस इज कांस्टेंट फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स रे जदि हमें देखमा a plus g divided by t plus c that is constant a plus g के मिसै दमा एडेनाइन केते अछि गुआनिन केते अछि मिसै देला डिवाइडेड बाय थाइमिन केते अछि साइटोसिन केते अछि मिसै देला देन तार वैल्यू केते बारबा 1 बारबा लेट्स सी हियर यू नो एडेनाइन केते अछि एडेनाइन अछि 2 थाइमिन केतेडा अछि 2 ओके सॉरी एडेनाइन रे लागि लखला हमें 2 देन काना मिसाबर अछि गुआनिन गुआनिन केतेरा अछि 2 गुआनिन के मिसाल 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय t प्लस c t केतेरा अछि दुईटा अछि c केतेरा अछि दुईटा अछि इज इक्वल टू 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2 2 4 इज इक्वल टू केते हला 1 दैट इज कांस्टेंट फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा छोटिया डीएनए टेनली पर जदि हम टोटल ह्यूमन रो ओके टोटल ह्यूमन रो जदि हम डीएनए नेला दैट इज वेरी लॉन्ग डीएनए ओके तार डीएनए रो सब न्यूक्लियोटाइड्स रो जदि हमें एडेनाइन गुआनिन के मिसामा
और थायमिन और साइटोसिन के मिसामा तार वैल्यू जदी बाहर करमा दैट विल बी 1. Okay, this value that is constant for every living organism. A plus G divided by T plus C is equal to 1, that is constant for every living organism. This concept was given by Chargaff through question IC. You have to remember this. Okay, तापर देखो अटके भीतर के एंटर करना काना कहले A plus G divided by T plus C is equal to 1 तो कहले A plus G माने काना A plus 0 माने हला एडेनाइन और गुआनाइन. एडेनाइन और गुआनाइन के कहार अंडर रे हमें रखसो प्यूरिन अंडर रे रखसो. एडेनाइन और गुआनाइन के कहार अंडर रे रखसो प्यूरिन अंडर रे रखसो. ओके दुईटा टाइप रो नाइट्रोजनस बेस पडितला. वन इज योर प्यूरिन एंड अनदर वन दैट इज योर पाइरिमाइडिन. ओके प्यूरिन रे के थिले एडेनाइन और गुआनाइन. पाइरिमाइडिन रे केन केन माने थिले थायमिन एंड साइटोसिन थिले. तो एडेनाइन और गुआनाइन के मिसे करे हमें काना लिखि परमा प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस लिखि परमा. एंड थायमिन और साइटोसिन के काना लिखि परमा पाइरिमाइडिन लिखि परमा. ओके थायमिन और साइटोसिन काना दैट इज योर पाइरिमाइडिन. एडेनाइन और गुआनाइन काना प्यूरिन. तो एडेनाइन गुआनाइन के मेसेज दला प्यूरिन थायमिन साइटोसिन के मेसेज दला पाइरिमाइडिन इज इक्वल टू केते हबा 1. दैट मींस प्यूरिन पाइरिमाइडिन रेशियो इज आल्सो 1. दिस इज आल्सो एंता टाइप रो भी क्वेश्चन आसी पारे. ओके तो इन द डीएनए इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म purine pyrimidine ratio is 1, that is constant for every living organism. DNA रे every living organism रो DNA रे purine pyrimidine ratio that is 1, that is fixed for every living organism, that is constant for every living organism. Okay, purine divided by pyrimidine is equal to 1. Purine के अंदर क्या है A plus G divided by T plus C. A plus G है purine, T plus C है pyrimidine. Okay, this was given by Chargaff's experiment. Chargaff out की काना कहिथिले out के भीतर के डुकुमा लेख. Okay, एबे टिके काना कहले A plus G divided by T plus C is equal to constant for every living organism. इटा तो डिस्कशन कला every living organisms. ओके बट तापरे फिर काना कहले देखो तापरे कहले एंड अकॉर्डिंग टू चार्गफ इधर भी क्वेश्चन आइसी A प्लस T जन जन माने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करसन A प्लस T A और T हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करसन A प्लस T डिवाइडेड बाय G प्लस C G और C हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करसन A प्लस T डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू constant, not 1, this is constant for a particular species of living organism. For a particular species of living organism. But a particular species of living organism रे हमें जदी देखमा, okay, A plus T divided by G plus C that will be constant. Actually काना कहला देखो. A plus T divided by G plus C, that is not 1. The 1 no. A plus G divided by T plus C, that is constant. इतर ratio constant है. कहाँ लगे constant है? That is constant for a particular species of living organism. Okay, human देखला. Human, all the humans, they belongs to a particular species. Homo sapien under रे जाऊँ हमें. Okay, human रो. सबो human के हमें आनला. Okay. जैसे भी ह्यूमन का मैं चूज कला से ह्यूमन रो डीएनए देखला से ह्यूमन रो डीएनए रे ए केते होचे टी केते होचे मिसाला डिवाइडेड बाय जी केते होचे सी केते होचे मिसाला और समान को जदी रेशियो बाहर करला सेटा केते आसबा कांस्टेंट आबा केते आसबा दैट इज योर 1.52 आसबा दैट इज नॉट 1 ए प्लस टी इन ह्यूमन जदी देखमा इन ह्यूमन केस रे इन ऑल ह्यूमन केस रे ए प्लस टी divided by G plus C is equal to 1.52. This is constant for every human. This is constant for every human. सबु human रो लगी सबु every human रो लगी A plus T divided by G plus C केते बाहर बा that is 1.52 बाहर बा.
क्वेश्चन आसी थ्रू मन रखी तो a plus t divided by g plus c that is constant for the particular species of organism माने all human रे that will be your 1.52 all human रे that will be your 1.52 बट हमें जदी कंसीडर करला आ गुटे ऑर्गेनिज्म गुटे छोटी ऑर्गेनिज्म ह्यूमन तो बहुत बिग ऑर्गेनिज्म है जस्ट वेट अ मिनिट लेट मी टेक ए कॉल ओके देखो आ गुटे छोटी ऑर्गेनिज्म नेला दैट इज योर इकोलाई बैक्टीरिया इस्चेरेचिया कोलाई समस्त जानि थिमा जदी हमें नेला इस्चेरेचिया कोलाई इकोलाई बैक्टीरिया जहा के कहू ओके इकोलाई बैक्टीरिया जतकी भी इकोलाई बैक्टीरिया अछन दुनिया रे सब इकोलाई बैक्टीरिया के अनला एंड समान को डीएनए के हम एनालिसिस करला समान को डीएनए रे जी देखबा इकोलाई बैक्टीरिया रे a plus t divided by g plus c that is constant that is 0.93 a plus t divided by g plus 3 केते रहबा 0.93 आसबा okay that is constant this is constant for every E. coli bacteria this is constant for every E. coli bacteria सब E. coli bacteria लगी this one is constant सब ह्यूमन रो लगी दिस वैल्यू इज कांस्टेंट बट a plus g divided by t plus c that is constant for every living organism इस जगह ह्यूमन E. coli बैक्टीरिया का के हमें सेपरेट कंसीडर नहीं करबा सब लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सी बी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठे नो a plus g divided by t plus c is 1 that is constant बट हमें जदी a plus t divided by g plus c a plus g और t plus c थिला a plus t divided by g plus c नहीं छु ओके काना के करू छु भल से मन रखी तो भल से माने देखो जे इ जगह रे काना नहीं आइतला इ जगह रे काना नहीं आइछि इ जगह रे a plus g नहीं आइछि इ जगह रे a plus t नहीं आइछि इ जगह रे t plus c नहीं आइछि तब इ जगह रे g plus c नहीं आइछि ओके इतर वैल्यूटा कांस्टेंट है दैट इज फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओके बट दिस वन दैट इज कांस्टेंट फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इ वैल्यूटा दैट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओके सपोज तुमको धरि नियो गुटे डीएनए दिया गला एंड तुमको एनालिसिस करो बोली करी कहा गला हाउ कैन वी एनालिसिस तारो अलगा कांसेप्ट अछि जस्ट तुमको कहू जा जे तुमको गुटे डीएनए दिया गला एन एनालिसिस करो बोली करी कहा गला तो हमें सेनु काना करमा केते एडेनाइन अछि केते थाइमिन अछि केते ग्वानिन अछि सेतके साइटोसिन अछि बाहर कराला ओके देखला समान को रेशियो a plus t divided by g plus c बाहर कराला केते बाहरला 1.52 जदी बाहरला तो कहमा यस दिस इज द डीएनए ऑफ द ह्यूमन ओके एडेनाइन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन केते होचे जानि देला तार रेशियो जदी बाहर करे देला देन वी कैन से दिस इज द स्पीशीज दिस डीएनए इज द डीएनए ऑफ द ह्यूमन ओके ई डीएनए टा का डीएनए ह्यूमन रो डीएनए कंफर्म ही परबा परसेंट जदी हमें बैक्टीरिया गुटे डीएनए नै छु ओके बैक्टीरिया टे पाइला बट से बैक्टीरिया डीएनए पाइला से डीएनए रो a plus t divided by g plus c बाहर कराला 0.93 जदी आसे पहले कहमा जे बेसिकली कहमा जे दैट इज द E. coli बैक्टीरिया बट जदी अलगा किछि वैल्यू आसुचे पहले कहमा जे दैट इज बिलोंगिंग टू अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया तार डाटा तुमे पाई जिवो गूगल रे यू कैन फाइंड दिस डाटा डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रे डिफरेंट वैल्यू रहसी different species okay this one is constant for the specific species of the living organism right ita gala amar kana that is your Chargaff's experiment okay तो मते कहो ह्यूमन रे आ टिके डीप रे जदी हमें जिमा ह्यूमन रे a plus t divided by g plus c केते आसला that is your 1.52 आसला 1.52 जदी आसला से नो एडेनाइन थाइमिन अधिका अछि ना ग्वानिन साइटोसिन अधिका अछि एडेनाइन थाइमिन अधिका अछि ना ग्वानिन साइटोसिन अधिका अछि क्वेश्चन आबा जे ह्यूमन डीएनए दैट इज एटी रिच और जीसी रिच एटी रिच माने काना एटी रिच और जीसी रिच कहला क्वेश्चन एटी रिच और जीसी रिच ओके एटी रिच माने काना जदी एडेनाइन ग्वानिन रिच माने धनी बहुत सारा एडेनाइन थाइमिन जदी थिबा एटी रिच कहमा बहुत सारा ग्वानिन साइटोसिन थिबा तो ताके कहमा में काम लिखि जीसी रिच बोली करी कहमा तो एना वैल्यू केते आउछे a plus t divided by g plus c 80 divided by gc केते आसुछ 1.52 सो मोर देन 1 आसुछ ना मोर देन 1 आसुछ पहले ई वैल्यूटा बढ़थिबा ना ई वैल्यूटा बढ़थिबा
सपोज फॉर एग्जांपल नो छे माने कर 3/2 कला 3/2 इज इक्वल टू केते आसबा 1.5 आसबा ओके जदि हमें 2/3 करथिता बेले केते आसीता 0. ओके 0.6 पाखा पाखी आसीता 3 0 318 0.6 पाखा पाखी आसीता 1 रु जदि बढ़ुचे बेले उपरटा बड़ थिबा 1 रु जदि कमुचे बेले उपरटा काना थिबा कम थिबा एन तलटा बड़ थिबा तो ई जगह रे हमर वैल्यू 1.5 टी अछि बेले 1 रु बढ़ुचे ना 1 रु बढ़ुचे बेले एटी अधिका थिबा ना जीसी अधिका थिबा एटी अधिका थिबा तो ह्यूमन डीएनए जे देखमा ह्यूमन रे देयर इज प्रेजेंस ऑफ मोर एडेनाइन एंड थाइमिन there is presence of more adenine and thymine as compared to guanine and cytosine as compared to guanine and cytosine okay new question is the human DNA is AT-rich more AT-rich region or more GC-rich region that is more AT-rich region but E. coli bacteria रे 0.93 बारिचे बेले लेस देन 1 बारिचे बेले सतारनो केंटा अधिका थिबा जीसी अधिका थिबा ओके क्वेश्चन आसबा जे E. coli bacteria have more guanine cytosine or more adenine thymine that is having more guanine cytosine 0.93 बारुचे लेस देन 1 बारुचे बेले तलटटा ओके लबो हर जहा भी कहस ओके तो इनो तलटटा जीसी टा अधिका थिबा एटीटा कम थिबा तो E. coli bacteria that is GC rich more GC rich and human टा that is more AT rich region DNA टा right एडा गला हमर काना that is the Chargaff's experiment तापरे विल्किन एंड फ्रैंकलिन काना करथिले देखो विल्किन एंड फ्रैंकलिन दे परफॉर्म द एक्स-रे डिफ्रैक्शन ऑफ द DNA इ माने DNA रो एक्स-रे डिफ्रैक्शन करथिले Wilkin and Franklin performed the X-ray diffraction of the DNA. DNA रो जते बेले एक्सरे डिफ्रैक्शन करा गला DNA के नै करी जते एक्सरे करा गला से टाइम रे एक्सरे करले हमें काना पैसु गुडा सीट पैसु से सीड रे डीएनए देख पार के पहले ही माने बट से सीड रे डीएनए एक्चुअली केंदा दिसुतला देख से सीड रे एक्चुअली एंदा किछि स्ट्रक्चर देख पार के मिलुतला ओके एंड इट इज जस्ट लुकिंग लाइक दिस बुक मान को तिसी देखो एंदा किछि स्ट्रक्चर देख पार के पहले इता के एनालिसिस करले के विल्किन एंड फ्रैंकलिन एंड इनो कहले जे विल्किन एंड फ्रैंकलिन रो हिसाब है जे डीएनए केंता थिबा दैट विल स्पाइरली कॉइल्ड हिसाब है प्रेजेंट थिबा एक्सरे डिफ्रैक्शन रो जना पल्ला ओके ते विल्किन एंड फ्रैंकलिन कंफर्म कले जे डीएनए इज हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज ए हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर डीएनए टा केंता स्ट्रक्चर है हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है हेलिकली कॉइल्ड माने काना स्पाइरली कॉइल्ड स्प्रिंग भलिया कॉइल्ड हेतिबा ओके हेलिकली माने काना हेलिकली माने हला स्पाइरली कॉइल्ड स्प्रिंग लाइक स्पाइरली कॉइल्ड ओके हमें डीएनए रा स्ट्रक्चर समस्त देखितबा ओके लेट मी ड्रॉ दिस हियर ओके विल्किन एंड फ्रैंकलिन कहले जे डीएनए कांता स्पाइरली कॉइल्ड हेतिसी ओके एक्चुअली माने डायग्राम टा नै बतैथे जस्ट कहितिले एनालिसिस करथिले देन द स्पाइरली कॉइल्ड हेतिसी डीएनए ये कांसेप्ट ता देले की दिस कांसेप्ट वाज गिवन बाय विल्किन एंड फ्रैंकलिन बट इता के नै करी तार मॉडल बनाले केन माने वाटसन ऑफ क्रिक एक्चुअली डाटा नेले कहार विल्किन एंड फ्रैंकलिन रो एंड सतार मॉडल जेतले बना गला से टाइम रे से मॉडल टा बनाले ई डाटा के बेस करी केन माने वाटसन ऑफ क्रिक ओके तो इटा गला हमर की दैट इज योर विल्किन एंड फ्रैंकलिन रो एक्सपेरिमेंट इ माने डीएनए रो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी और एक्स-रे डिफ्रैक्शन करथिले डीएनए रो एंड सेनु पाइतिले जे डीएनए इज हेलिकली कॉइल्ड हे करितिस बोली ओके तो इटा गला हमर काना दैट इज द विल्किन एंड फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट एज वेल एज चार्गॉफ्स एक्सपेरिमेंट ओके नेक्स्ट हम डिस्कशन करबा दैट इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एक्चुअली दैट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक जेंटा
वाटसन और क्रिक डाटा देइतिले जहा जहा डिस्क्राइब करथिले 3D स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए तार बाबद रे हमें डिस्कशन करमा ओके तो इटा गला हमर 3D स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कशन सॉरी दिस इज योर चार्गफ्स एंड विल्किन एंड फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करमा दैट इज अबाउट द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए दैट वाज एक्चुअली गिवन बाय द वाटसन एंड क्रिक इन ए न्यू वे गोटे एनिमेशन वे रे हमें डिस्कशन करमा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नै कि हमें डिस्कशन करमा किछटा वर्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए I will collect this data and I will show this in the next class. Okay, आज due to some shortage of time we सारे data collect करने पर से हमार 3D structure of the DNA जेंडा actually animated 3D structure that we will discuss this. Okay, actually due to some shortage of time we सारा करी नहीं पारी तो next class रे हमें से structure के नई क्रिया आसमा and we will discuss that. Okay, hope you all enjoy this session. If any doubt you can write to us. Our chat box is open for all of you. And again I want to say please share this application with your friends so that everyone should get benefited from our nucleotide application, because this is the only application which is the first application developed in the Western Odisha, so that this is the good for the all of you, so that everyone should get the benefit from this application. So that I want to request you so that you all should circulate this with your friends and family or everyone. Thank you.